Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 56 as I'll be continuing with exercise 2 of Unit 14 articles. So students, please take out your English grammar book and turn to page number 56 as I'll be continuing with exercise 2 of Unit 14 articles. Students, in my last video, I had started with exercise 2, that is fill in the blanks with suitable articles. And I had done the first 7 filling the blanks. Now today, before I start with the 8th one, I would like to revise the first 7 fill in the blanks. The first one, I have a bag and a raincoat. I have a bag and a raincoat. Please write A before bag and A before raincoat. So please write A before bag and A before raincoat. So I have a bag and a raincoat. Then the second one, give me a glass of water. Write A in the second blank. Give me a glass of water. Then the third one, this is an ice cube. Put the ice cube in my lemonade. This is an ice cube. Put the ice cube in my lemonade. Write N in the first blank and the in the second blank. Always remember, we use the indefinite article A or N with a general thing. But when we specify or we are talking about a particular thing which is again being repeated in the next sentence, we always use the definite article the. The fourth one, my mother reads the Navbharat Times daily in the morning. The will come in both the blanks. We will use the definite article the before Navbharat Times because Navbharat Time is the name of a newspaper. And before the name of newspaper, we always use the definite article the. Then in the second blank of fourth, again we'll be using the because here we are specifying the time. Morning, so the morning. So my mother reads the Navbharat Times daily in the morning. Then the fifth one, my dog's name is Google. It has a pup. The pup is 1 month old. We'll be writing A in the first blank of fifth one and the in the second blank of fifth one. A, because here we are talking about one pup. Fine. And again, when the pup, that noun is being repeated, we will be using the definite article the. But here, the T of the will be capital as we are starting the sentence. So, my dog's name is Google. It has a pup. The pup is 1 month old. Then the sixth one. The milk in the glass is warm. Both the blanks, the will come. The first blank, the T of the will be capital, the milk, because milk is uncountable. We do not use the indefinite article A or N before uncountable things. And here we are talking about some specific milk which is in a particular glass. So the milk in the glass is warm. Seventh one. The sun rises in the east and sets in the west. Now, in the seventh fill in the blank, in all the 3 blanks, the will come. Because sun is a unique thing. So, before all the unique things like sun, moon, sky, stars, we use the. So, the sun rises in the east and sets in the west. Then, in the second and third blank, students, east and west is there, which are directions. And we always use the before directions. So the sun rises in the east and sets in the west. Beta 7th के तीनों blanks में the आएगा. But remember, the first T of the, that is before the sun, will be capital as we are starting the sentence with it. Now, I'm going to start
with the 8 fill in the blank. The 8 fill in the blank. Mohan is dash honest man. He works at this shop for dash our daily in dash evening. Now, students, the 8th fill in the blank is Mohan is dash honest man. Now, we need to use the article before the noun honest man. Now, if we look at the spelling of honest, the spelling starts with H, which is a consonant. But when we pronounce this word honest, the sound comes of the vowel. Fine? So, for all those words which have got the sound of a vowel and which are single countable nouns, we will be using the indefinite article N. So, you need to keep in mind कि बेटा जो honest word है ना, though the spelling starts with H, but when you pronounce this word, the sound comes that of a vowel. Vowel का sound आता है, तो आपको sound के हिसाब से बेटा article fill करना है. तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे बेटा? N. Mohan is an honest man. Fine. Though the spelling it starts with H, but when you pronounce this word, you pronounce this as honest, है ना? So that O sound is coming. O vowel का sound आ रहा है. So we will be using the indefinite article N in this first blank of the 8th one. Mohan is an honest man. Then the second sentence. He works at the shop for dash hour. Now again, hour. The spelling of hour has got H, है ना? But when we pronounce this word, the sound comes of again O, है ना? H का कहीं भी sound नहीं आ रहा है. Sound किसका? O का आ रहा है, which is a vowel. तो vowel का sound आ रहा है. So again, we will be using the indefinite article N, है ना? So honest and hour बेटा, है ना? दोनों की spelling H से start है. But when you pronounce this word, the sound दोनों में किसका आ रहा है? A, है ना? Honest, R, है ना? दोनों में that sound of vowel is there. So we have used N in both the blanks. I hope this is clear. Now you need to know that आपको spelling नहीं देखना है, आपको sound देखना है कि when you pronounce this word, and for this your pronunciation should be accurate. If your pronunciation is accurate, you will be easily able to do this. So Mohan is an honest man. He works at this shop for an hour daily in dash evening. Now again we are specifying the time, morning, evening, afternoon, है ना? तो उनके आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? द. डेफिनेट आर्टिकल द, क्योंकि हम डे के कोई पर्टिकुलर टाइम की बात, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, in the afternoon, so we will always use the definite article before evening, morning, afternoon, because here we are specifying a particular time. So the 8th fill in the blank is Mohan is an honest man. हमने N क्यों लगाया? Because honest में किसका sound है? Vowel का sound है ना? हम इसको honest नहीं बोलते, honest, vowel का sound है, so हम N use करेंगे. He works at the shop for an hour. R में भी किसका sound है? Vowel का sound है. So we are using the indefinite article N. Fine. Daily in the evening. Evening, morning, afternoon. Always remember, हम इनके आगे definite article the use करेंगे. So Mohan is an honest man.
Mohan is an honest man. He works at this shop for an hour daily in the evening. So I hope students, all of you have done the 8th one. Now I'm going to erase this and write the 9th one. Now the 9th one. Dash unicorn. I hope all of you know the meaning of unicorn. Unicorn is an imaginary creature. एक हॉर्स जैसा creature है जिसके head के ऊपर एक horn है and it has got wings. So that is known as unicorn. Dash unicorn is dash imaginary. Imaginary मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस लोगों ने इमेजिन किया है कि ऐसा भी कुछ फीचर हो सकता है. Now, the 9th fill in the blank is dash unicorn is dash imaginary animal. अब बेटा हमें यूनिकॉर्न के लिए कौन सा आर्टिकल यूज करना है? इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन में से, है ना. यूनिकॉर्न. अब आप ध्यान से देखो, दो दी स्पेलिंग ऑफ यूनिकॉर्न ये यू से स्टार्ट हो रही है ना. बट इसमें साउंड किसका आ रहा है? जब हम बोल रहे हैं वाई का साउंड आ रहा है ना. यूनिकॉर्न ये यू वाला साउंड आ रहा है ना. ऊ वाला साउंड नहीं आ रहा है, यू, है ना. आप ध्यान से सुनो, हम क्या बोल रहे हैं? यूनिकॉर्न. हम इसको यूनिकॉर्न नहीं बोल रहे, है ना. दैट ऊ अ वाला साउंड नहीं आ रहा है, यू वाला साउंड आ रहा है. किसका साउंड आ रहा है? वाई का साउंड आ रहा है ना. हम जब यूनिकॉर्न को बोल रहे हैं तो इसको बोलते समय यूनिकॉर्न, हम यूनिकॉर्न नहीं बोलते. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज यूनिकॉर्न. और यूनिकॉर्न में यू का साउंड आ रहा है एंड यू किससे स्टार्ट होता है? वाई से. दैट मीन्स कि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो हम इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज करेंगे. एंड आर ए विल बी कैपिटल. वाई कैपिटल? बिकॉज हियर वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विद आवर article. So a unicorn is dash imaginary animal. Imaginary, है ना. vowel का sound आ रहा है, so we will be using n. So our sentence will be a unicorn is an imaginary animal. Now you need to understand, the students, that you need to focus on the sound of the word to use the article. If your pronunciation is accurate, you will be able to fill in the राइट आर्टिकल. यूनिकॉर्न यू का साउंड आ रहा है, ऊ का साउंड नहीं आ रहा है. एंड यू, दैट मीन्स वाई, दैट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट इज कमिंग, सो वी हैव टू फिल ए. अ यूनिकॉर्न इज एन इमेजिनरी एनिमल. सो प्लीज राइट द 9 fill in the blanks. A unicorn is an imaginary animal. I hope everyone has done. So now I'm going to erase this and write the 10th one. The 10th one. Dash umbrella is dash useful thing. Now, our 10 sentences, dash umbrella is dash useful thing. अब आप इसको ध्यान से देखो, है ना. umbrella, UMBRE, है ना. umbrella, है ना. अब देखो दोनों ही बेटा वर्ड्स यू से स्टार्ट है, बट प्रोनाउंसिएशन में कितना डिफरेंस है. UMBRELLA, umbrella, vowel sound is coming, whereas USCFUL, useful, that YOU, Y sound is coming, that means consonant sound is coming. So now we need to fill in the article as per the sound of the words. So umbrella, we'll be using an, because का sound आ रहा है ना, vowel का sound आ रहा है ना.
So an umbrella is now useful. Both the words are starting with U, but what is the difference? है ना? The difference is of sound. So an umbrella is now. अब बेटा useful. Useful में किसका साउंड आ रहा है? अगेन यू. यूजफुल, यू, ये वाले यू का वाई का साउंड आ रहा है. सो कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल ए. यू कैन सी द डिफरेंस इन दी प्रोनाउंसिएशन. अम्ब्रेला की स्पेलिंग भी यू से स्टार्ट हो रही है, बट इसमें हम इसको प्रोनाउंस करते हैं अम्ब्रेला. अ साउंड, दैट वावल साउंड इज कमिंग. Whereas the spelling of useful also starts with U, but when you pronounce this word, that sound comes of Y. U, Y-O-U वाला U का sound आता है. So we'll be using the indefinite article A, है ना? आप ये मत सोचिए कि दोनों में U है तो हम आँख बंद करके N लगा देंगे. No, now you need to focus on the sound. That is the pronunciation of the word. आपका जो अगर pronunciation is accurate, then you will fill with the correct article. जिसमें भी नो मैटर स्पेलिंग आपकी कॉन्सोनेंट से है, वावल की, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट दैट आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, अगर वो वावल का साउंड आ रहा है तो आपको एन फिल करना है, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो आपको ए फिल करना है. अम्ब्रेला में वावल का साउंड है, सो वी हैव यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल एन. एंड यूजफुल में वाई ओ यू, यू वाला साउंड आ रहा है, Y का साउंड आ रहा है, so we have used it with the indefinite article A. So our sentence is, an umbrella is a useful thing. Fine. So I hope everyone has written the 10th one. Now I'm going to erase this, children, and write the 11th one. We have dash garden full stop. There is dash guava tree and dash apple tree in dash garden. Okay, now we have dash garden. There is dash guava tree and dash apple tree in garden. Fine. Now we have garden is the noun for which we need to fill the article. So garden, the sound we are talking about, we have a garden, है ना? The sound किसका आ रहा है? Consonant का आ रहा है, ग का. That garden, G sound is coming. So we will be using the indefinite article A. We have a garden. Now in the garden what is there? There is a guava tree. Guava, है ना? Again that sound is of consonant, है ना? Guava, guava जानते हैं ना? अमरूद को बोलते हैं. So guava tree, अमरूद वाली tree, है ना? There is a guava tree. That sound of consonant is there. So we will be using the indefinite article A. There is a guava tree and apple tree. Apple, that sound is of vowel. So and an apple tree. Now the most important thing in this sentence, आप देखो पहले सेंटेंस में गार्डन रिपीट हुआ है ना. वी हैव अ गार्डन, हमने एक जनरलाइज बात की कि वी हैव अ गार्डन, है ना. और उसी गार्डन में देयर इज अ गुआवा ट्री एंड एप्पल ट्री. नाउ हियर द गार्डन, दैट नाउन इज बीइंग रिपीटेड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गार्डन, है ना. तो जब भी कोई नाउन रिपीट होता है बेटा सेकंड सेंटेंस में या पैराग्राफ में,
तो आप, और वो स्पेसिफिक हो जाता है कि हम उसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी ऑलवेज यूज द डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, गार्डन पहले सेंटेंस में रिपीट हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पे गार्डन के सामने क्या यूज किया है। अब जब फिर से रिपीट हुआ है तो द। सो आई हैव अ गार्डन, देयर इज अ गुआवा ट्री एंड एन एप्पल ट्री इन द गार्डन। So we have a garden, there is a guava tree and an apple tree in the garden. Please write. So the 11th fill in the blanks will be, we have a garden, there is a guava tree and an apple tree in the garden. Fine. I hope everyone has written. Children, now you need to focus on the sound of the words, and as per the sounds you need to fill in the article. So I am going to erase this and write the 12th fill in the blank. Now, the 12th fill in the blank is, look at dash blackboard. Now, in the class, the teacher always says, students, look at blackboard. क्या बोलती है टीचर blackboard के आगे? टीचर हमेशा look at the blackboard. Why the blackboard? Because आपको टीचर क्लास के ब्लैक बोर्ड में देखने की तरफ बोलती है. एट टाइम्स यू ऑल टेंड टू लुक हियर एंड देयर, है ना, यू लूज योर कंसंट्रेशन. सो व्हाट डज योर टीचर सेज? लुक एट द ब्लैक बोर्ड. क्यों बोलती है टीचर? बिकॉज शी इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ब्लैक बोर्ड, है ना. हम जनरलाइज कोई भी एक ब्लैक बोर्ड को देखने को नहीं बोलते, है ना, बिकॉज इन द क्लास देयर इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्लैक बोर्ड एंड द टीचर वांट्स यू टू सी ऑन दैट ब्लैक बोर्ड. सो जब हम कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज, डेफिनेट चीज के बारे में बात करते हैं, है ना, कोई पर्टिकुलर, है ना, तो हम हमेशा द डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं. सो द 12 sentences, look at the blackboard. Fine. The 12th one is, look at the blackboard. Now I hope everyone has written the in the 12th blank, students. Look at the blackboard. जब किसी भी डेफिनेट चीज की तरफ आप को आर्टिकल यूज करना है, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर के लिए, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे बेटा? द. सो द 12th one is, look at the blackboard. So now I'm going to erase this and write the 13th one. The 13th one. Dash moon is dash natural satellite of dash Earth. Okay. Now, we all know that we need to use the before all the unique things. So, dash moon. Moon क्या है? एक unique thing है ना? So, the moon and the T of there will be capital. Why? Because we are starting the sentence. The moon is dash natural satellite of earth, है ना. तो moon क्या है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है. सो the moon is a natural satellite of earth. Earth is again unique. अर्थ भी यूनिक चीज है. अर्थ जैसा कोई दूसरा प्लैनेट तो है ही नहीं. सो we again use the definite article
The moon is a natural satellite of the earth. Fine. तो 13 क्या हो गया? The moon is a natural satellite of the earth. We need to keep in mind कि जो यूनिक चीजें हैं उनके आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा? The. Fine. So the moon is a natural satellite of the earth. कि मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है. फाइन. सो द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. द मून, अर्थ, स्टार्स, स्काई, ये सारी चीजें बेटा क्या है? यूनिक है. तो यूनिक चीजों के आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? द. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन स्टूडेंट्स. नाउ I'm going to erase this and write the 14th one. Close dash window. Now close dash window. अब बेटा यहाँ पे इन दिस सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर विंडो, है ना. बहुत सारी विंडोज होती हैं रूम में, हाउस में, कहीं भी. एंड इफ समबडी इज टेलिंग यू टू क्लोज वन पर्टिकुलर विंडो, दैट मीन्स वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर विंडो की बात करें, कोई डेफिनेट विंडो की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे, है ना. नाउ अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि मेरे रूम में एक विंडो है, तो यू विल यूज देयर इज अ विंडो इन माय रूम. बट अगर ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, दैट मीन्स कि हमें कोई पर्टिकुलर विंडो की बात कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि क्लोज करो या ओपन करो. सो उनके आगे हमेशा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट थिंग, सो वी विल बी यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल द. क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर, है ना. तो उसके लिए हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं. So please write the in the 14th line. Close the window. Fine. So you need to keep in mind कि definite article the कहाँ use होता है? Before the name of rivers, mountain ranges, है ना? A superlative degree of comparisons, then the directions, then the name of newspapers, then the name of rivers, holy books, है ना? Like तो इन सब चीजों के आगे द यूज होता है और आपको ये याद रखना है. सो जब भी हम किसी डेफिनेट पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द. सो प्लीज राइट द इन दी 14th line. I hope all of you have written, students. Now I am going to erase this and write the 15th one. There is dash window in my room. Now you want to tell anyone कि आपके रूम में एक विंडो है. तो आपने इससे पहले में हमने क्या यूज किया था? द, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर विंडो को क्लोज करने की बात कर रहे थे. बट यहाँ तो हम कह रहे हैं कि हमारे रूम में एक विंडो, वी आर टॉकिंग इन जनरल, है ना. तो जब हम जनरल किसी एक चीज को बताते हैं तो हम उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं. नाउ देयर इज विंडो क्या है? विंडो में कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. सो वी विल बी यूजिंग द इंडेफिनिट आर्टिकल ए. सो देयर इज अ विंडो इन माई रूम, है ना. इससे पहले वाले सेंटेंस में था क्लोज द विंडो, है ना. दैट मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर विंडो को क्लोज करने की बात कर रहे थे, वो स्पेसिफिक था. और यहाँ पे देयर इज अ विंडो इन माई रूम, मेरे रूम में एक विंडो है ना. हम एक जनरल बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज करेंगे. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. जहां आपको कोई एक जनरल चीज की बताना है तो वहां पे आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज करेंगे. और वो किस बेसिस पे यूज करेंगे? वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए, है ना. अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे आप कभी भी ए और एन नहीं यूज करते, ये आपको बेटा
याद रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस काउंटेबल सिंगल काउंटेबल नाउन का जो साउंड है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर साउंड वावल का है तो आपको उसके पहले एन लगाना है, और साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है तो उसके आगे आपको ए लगाना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज 2 of unit 40 articles. That's all for today, students. Please complete both the exercises of article and revise all the taught exercises. Fine. So that's all for today, children. Thank you, students. Have a good day ahead.